has won the T20 series against Sri Lanka, 91 runs, first innings total of 228, and a beautiful innings by Surya Yadav. Welcome to the show, guys. What are your thoughts on the innings, Shubham? I'll ask you first. What was that batting display? Not just by Surya, we'll come to him later, but about from Gill and from Tripathi. Overall batting performance by India. आई थिंक ऑल राउंड परफॉर्मेंस थोड़ा वही कंसर्न था कि फिर से पावर प्ले में वी स्टार्टेड अ लिटिल स्लोली बट देन हाउ थिंग्स वर मैनेज्ड इट वाज क्वाइट नाइस वी टोटली बैटेड श्रीलंका आउट ऑफ द गेम व्हिच वाज ग्रेट टू सी मतलब बहुत टाइम से नहीं देखा था बैटर्स कमिंग टू द पार्टी टेकिंग द एंटायर गेम बाय द स्क्रफ एंड लाइक टेकिंग इट टू वन साइड जो आज देखने को मिला बट अगेन नॉट वेरी हैप्पी विद द यू नो top order again, but then much improved and a very strong performance compared to the last two games and how he Coming, handled the bat. Yeah. coming to you with it, I think similar type of question. If you see, Gill was off to a slow start, was almost getting into it when he got out. But again, a beautiful innings by Tripathi, just playing his second T20I international. What about your thoughts on his innings today? Shivam, what are your thoughts about? गिल हैज रिप्लेस केएल राहुल. अगर गिल उठाएंगे खेलेंगे नहीं तो फायदा ही नहीं है. जी बिल्कुल. आई थिंक सम वहां एक टेक्निकल बहुत इश्यूज हैं बड़ी विदित की साइड पे. शुभम, व्हाट आर योर दिक्कत थॉट्स? आ जाती है यार. अगर गिल बहुत स्कोर ऑफ 32 में यार देखो, अगर जी गिल खेल बिल्कुल. रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं है. दैट इज नॉट अ गुड इनफ स्कोर. और त्रिपाठी ने आके बचा लिया. त्रिपाठी स्कोर्ड 35 रन्स. वेरी गुड इनिंग्स. त्रिपाठी भी आज डक हो सकते थे. डिड नॉट गेट आउट. वो कीपर के छूट गई थी. त्रिपाठी मैच खेल नाइसली. जो पावर प्ले का 50 प्लस का स्कोर था वो बहुत जरूरी था. पर यार अगर गिल खेलना है consistently and he need to score at a better strike rate. Certainly. I think Shivam, one more point. I think a lot of the commentators are saying how Tripathi can be another Sky because selfless हैं. आके बिल्कुल जल्दी से आके बैट कर सकते हैं. Can score runs quickly अगर open wicket भी गिर जाता है. So very important for him also to do well. What are your thoughts on Tripathi? Where do you see him in the Indian T20 setup? I mean, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आई थिंक ओपन तो नहीं किए बट लाइक आई थिंक करा है एक आधी बार. आई एम नॉट श्योर एक्चुअली बट थोड़ा कॉन्वर्सेशन वो भी अराउंड था कि व्हाट इफ यू ओपन विद त्रिपाठी एंड निशान अप टॉप एंड देन यू प्ले कोहली वन डाउन एंड स्काई प्लेज दैट इज नेचुरल नंबर 4 तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर बन जाएगा. बट अगेन किशन की इनकंसिस्टेंसी इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न बट ओवरऑल गुड फ्रॉम त्रिपाठी वेरी फियरलेस. आई थिंक ये ऑलमोस्ट ये अप्रोच ऑलमोस्ट हर बैटर की थी एंड थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा विद विदित विद रिस्पेक्ट टू गिल वेयर ही सेड कि रन बॉल खेल रहे थे. Maybe that was the direction for him to play as a second fiddle to everyone else because everyone around him, if you saw everyone's approach, they were all trying to go at it from the first ball. हार्दिक को भी जिस ओवर में आउट हुए 11 रन आ चुके थे. हुड्डा जिस ओवर में आए 12 रन आ चुके थे. सो आई मीन दिस वाज आफ्टर गिल गॉट आउट बट मुझे तो यही लगा कि डायरेक्शंस वर सच कि भाई यू स्टे देयर रोटेट द स्ट्राइक एंड लेट एवरीवन एल्स अराउंड यू go at it पर from the शुभम front. ठीक है. डायरेक्शन अगर Also, I think पहले में तो नहीं हो सकती ना. गिल was 0 of 9 balls. Gill was 0 of 9 balls. How do you justify direction? I With think it, with see, it, like the you point just here is try to also that I set think up that things. Yeah. Kishan getting out early was also Gill had to stay on one end because we had lost one opener, I think. So again, he started off slow. Exactly. Totally agreed that you don't expect an opener, especially because we want हम बहुत बात कर रहे हैं कि इंडिया का ओपनिंग 6 ओवर में रन नहीं आते हैं. तो we definitely want someone to go hard. I think by the nature of it, I think किशन है जो जल्दी खेलना चाहते हैं. Gill is the one जो other partner थोड़ा slow start कर सकते हैं. But again, well justified. But I think by the end of it, 46 or 36, he made up ground Yeah. after मतलब almost अगर run a ball. effectively if you score like a 60 of 40, it's considered a good inning, right? So he was just 3-4 balls away and 32 of 34 थे and then he suddenly केएल accelerated. राहुल ने 46 और 36 मारी होती तो सब गाली दे रहे होते. सब केएल राहुल को गाली दे रहे होते. सेम स्कोर होता तो मैं जस्ट नहीं करूंगा गिल का स्कोर भी. मतलब ऑनेस्टली नहीं कर Yeah, सकता. I think his inning today was situational. तो मैं नहीं agree करूंगा उस पे because आई I थिंक thought अगर he आप was दूसरी just बात ये देखें out. कि आई दोनों तरफ रहेगा शिवम. अगर अगर वहां पर त्रिपाठी आउट हो जाते तो प्रॉब्लम हो जाती बिकॉज फिर सारा प्रेशर स्काई के ऊपर आता था. वही बात है. आई थिंक ही प्लेड द सिचुएशन वेल बिकॉज वो देख Especially रहे थे well, कि स्काई exactly. कंटिन्यूअसली बैटिंग कर रहे हैं एंड ही वाज हिटिंग वेल. तो ही डिड नॉट रिक्वायर टू थ्रो अवे हिज विकेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Coming on to the performance, the man of the match,
Probably the player of the series for me was Surya with it. Third century in 43 innings. This is his 13th half century and third century. He was just unstoppable. His all three centuries has been at the same strike rate, but today again unplayable. He did not give anything away to Sri Lankan bowlers. What are your thoughts on Sky? Adhiraj, mind-boggling. I think the best T20 national player going on right. स्काई जो इंडिया के लिए नंबर 4 पे कर रहे हैं, इट्स सो गुड कि वो केकेआर से मुंबई है, मुंबई ने उनको ऊपर ऑर्डर में खिलाना शुरू किया एंड ही स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स एंड मेरे हिसाब से अक्षर पटेल ही प्लेयर ऑफ द सीरीज थे बिकॉज ही डन सो वेल विद द बैट इन ऑल 3 मैचेस एंड द बॉल इन द लास्ट मैच एंड आज भी जब श्रीलंकन प्लेयर्स मार रहे थे ही गॉट द फर्स्ट विकेट ऑफ द सीरीज अक्षर पटेल डेफिनेटली आज की इनिंग्स अनइमेजिनेबल यार मतलब अगर त्रिपाठी के अलावा और एंड में अक्षर की जो 10 बॉल के अलावा यार आप किसी की भी इनिंग्स राइट फ्रॉम श्रीलंका एंड स्काई का ऐसा चांस है बहुत कैचेस नॉट अ कैच ड्रॉप्ड सिंगल सो आई थिंक फ्लॉलेस इनिंग इतनी बार गिर गिर के उन्होंने थर्ड मैन फाइनल ऊपर से मारा है स्ट्रेट मारा है मिस्टर 360 करंट. Certainly. I think Shubham, one more question on Sky, specifically on you. 46 plus ka average है T20 eyes में. He's striking at more than 180. The only question that I have is India too dependent now on Sky? Because अगर Sky वो 4 नंबर पर आकर इस फास्ट पेस में नहीं खेल रहे because हमारे ओपनर्स नहीं रन बना रहे कंसिस्टेंटली, तो क्या इंडिया का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है? अगर इंडिया को बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पे लगाना है या चेस करना है, are they too dependent on Sky now to score at 180 plus in every game and score those big runs for India? हाँ यार, मतलब थोड़ा डिपेंडेंस तो है ही टिल द टाइम अदर प्लेयर्स कम टू द पार्टी। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक दे आर टोटली डिपेंडेंट बिकॉज़ आज तो लाइक द वे ही बैटेड बाकी सब हल्के में ले गए, आए अपने शॉट्स खेले। बट इफ नॉट हिम समवन एल्स वुड हैव कम टू द पार्टी एज़ वेल, यू नो। तो आई मीन his contribution over the last 1 year in T20s has been like so strong कि आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं dominated है. But like you say, if not him, then someone else, right? Someone else would have played that role. But as a unit, I think as a whole, even as bowlers and everything, you can't take away the fact that the team as a whole did really well today. Certainly. I think coming on to the bowling performance, the target was set to 29, but the bowler still had to give in put in the effort because Sri Lanka made 209 in the second T20. With how happy are you with all the bowlers chipping in today? Almost everyone getting a wicket, and it was completely all round bowling performance by Team India. बिल्कुल bowling was very good. One more thing on Sky, in addition to what Shubham said, was कि Sky ने क्या 2022 खत्म हो गया है, जितना फॉर्म था 2023 is a fresh start. So at least he is not for granted. He knows कि हर मैच नई स्टार्ट होती है. ठीक है, बहुत अच्छे टच में, पर नया साल है, उनको वापस प्रूव करना है, जैसे 2022 में किया. एक और वर्ल्ड कप आ रहा है, आईपीएल होने वाला है. लॉट्स टू प्रूव फॉर स्काई. और बॉलर्स की बात करें, आज मुझे बस एक चीज थोड़ी सी खराब लगी, वो था कि आज शिवम मावी ने एक ही ओवर डाला, स्पेशली इन द मैच यू वांट टू ट्राई आउट द बेंच. मैं चाहता था कि मावी 4 ओवर डाले, हार्दिक 4 ओवर नहीं डालते, फिटनेस का है, को विकेट मिल गई है, तो आई थिंक हार्दिक अपना कोटा पूरा करने की जगह आप ओवर उमरान और मवी को दो, क्योंकि जब बुमराह आएंगे दे डेफिनेटली है कि गेटिंग आवर बेंच स्ट्रेंथ हायर कुछ हो रहा है. तो आई थिंक मावी और उमरान मलिक को 4-4 ओवर यू वांट टू बॉल्स एज पॉसिबल. पर उसके बाद अर्शदीप सेकंड मैच के बाद बहुत लोग कह रहे थे 5 नो बॉल डाल दी, आज भी डाली, बट लीस्ट ही इज बैक अमंग द विकेट्स, यॉर्कर डाल रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, गुड फॉर हिम. उसके अलावा उमरान की पेस से एवरीवन इज इम्प्रेस्ड एंड अक्षर हैज बीन सो. चहल की भी 2 विकेट्स आई, शानका ने 2-3 छक्के जरूर मार दिए चहल को, उनकी फिगर्स थोड़ी हाई चली गई. तो द फर्स्ट T20 जब इंडियन स्पिनर्स पे बहुत गाली पड़ रही थी यार चहल को बाहर करो, चहल हैज गॉट 2 विकेट्स इन द सेकंड T20. I would say bowlers did well to restrict score. बस ये था कि यार मवी प्लेयर ऑफ द मैच थे फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड मैच में 50 रन से ऊपर था, एक ही ओवर डाला. बुमराह वापस आएंगे, मवी को ड्रॉप कर दिया जाएगा. वांटेड मवी टू एटलीस्ट
entire quota. Certainly. One more, one more thing I think I want to talk about, Shubham, especially coming to you, is Hardik Pandya is the new T20 captain. How impressed have you been with his captaincy? I think all the players, all the youngsters, he's been backing them. He's rotating the bowlers. Things are working well for him, and every youngster is talking about how he's backing them as a player. Akshay ने I think आज एंड में आके बोला कि कैप्टन मेरे को बोलता है कि I am backing you. You bat the way you want to, and that has how it has helped him a lot. So, what are your thoughts on Hardik's captaincy? Maybe it's too early; it's just one series, but just based on this series, what are your thoughts on it? It's obviously very impressive. Matlab, the way players are talking about him, the players are talking about the confidence that they give getting out of their cap. अगर कैप्टन ऐसे बैक करता है तो बाकी सब प्लेयर्स का जो काम होता है बहुत आसान हो जाता है. बट अगेन व्हेन यू आर विनिंग all these things are far easier said than done. और अगर एक बार हारने लग जाएं तो everyone starts taking out mistakes. So it's right now too early to judge, but signs have been great. He has proven to be that fearless captain जो आके बैट से भी बॉल से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. उमरान को रन पड़ रहे हैं एंड ही इज लाइक फाइन भाई तू पेस के लिए जा यूज योर स्ट्रेंथ इट्स फाइन तू 11 की इकोनॉमी में खेल रहा है टोटली ओके विद दैट. तो जब तक players are getting the confidence and they're happy to play for him, perform for him, that's all that matters. And as long as we're getting results, because results नहीं आए हैं recent past में, अब टीम को results चाहिए और बड़ी trophies जीतनी है. Certainly. To you with it also on But Hardik's शुभम ये captaincy, because श्रीलंका I के think साथ सीरीज है, इज इट टू सून टू से कि उन्होंने श्रीलंका को हरा के 2-1 इट्स मतलब जल्दी नहीं That's हो what I'm गए? saying. It's too early to say. Like right now, you can't take a decision if it's a good captain or not. Like that's what I'm saying, right? अगर match तुम अभी तक जीत रहे हो, so it's easy to say these things. अगर यहाँ series हार रहे होते, तो conversation would have been totally different, right? तो बस बात तो वही है main factor. I think obviously like Shubham said and with Api Bodek, it's too early to judge him. But just speaking on, if you look at it, Keith, second match के Arshdeep पे, everyone was talking about how he's bowled too many no balls. But again, giving the new ball back to Arshdeep, he's backing the bowlers well, especially the youngsters. आपने कहा युमरान को back कर रहे हैं जैसे आपको डालना है. So good to see a captain doing that. Obviously, just based on that, obviously very early to judge Hardik on his captaincy itself. But first trophy for him as an Indian captain. Good to see him do well. Good to see Team India do well. We'll be back again for the ODI series that's starting on the 10th of Jan. Thank you for joining with us. And India has won the T20 series against Sri Lanka 2-1. Thank you.